Yes. So what are meetings? Meetings means, yes, Arjun. Just a minute. All right. So meeting means, just a minute. Yeah. Getting together of a number of persons for transacting any local business. Okay. So see, in a company, there are shareholders, there are directors, there are creditors also, there are debenture holders. So every kind of group of persons who are, involved within a company, they are going to hold their own kind of meeting. Okay. So company meetings are basically divided into these following categories. So for first and foremost type of meeting which has been important within a company is the shareholder meeting. So who is shareholder? Who owns the share of the company? Right? As simple as that. Okay. So shareholder meeting, first type of shareholder meeting is a statutory meeting, which is being covered under section 165. And this meeting should be held every year. This meeting should be conducted by the shareholders every year, provided if the company is a new company, if it has incorporated newly, then within from 1 month to 6 months, the company is supposed to conduct this statutory meeting by the shareholders, and in which at least 2 directors are supposed to be present. Okay, इतना डिटेल में लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, but yeah, you should be knowing that what is statutory meeting. So statutory meeting is a meeting. It is compulsory to be conducted by the shareholders once in a year. Okay, this is a statutory meeting. Then we have got AGM. Okay, AGM, annual general meeting. This is very, very, very important meeting. So this is the meeting wherein the shareholders are supposed to take the major decisions of the company, like the appointment of directors, retirement of directors, remuneration of directors, subscribing, like how much shares is supposed to be, like IPO kitna lana hai, and how the capital is supposed to be raised. So all major decisions are taken in the AGM. Okay, AGM, it has to be conducted once in a year. All right, that is why we call it as an AGM. Then we have got EGM, that is known as extraordinary general meeting. So if the company, if the shareholders has to discuss something urgent, okay, and it's not a part of the regular business, then they can call EGM. Last is a class meeting. So there are various type of shareholders. ठीक है, जैसे कि we have got preference shareholders. Under preference shareholders we have got certain categories also. So अगर उनसे related कोई भी matter है, ठीक है, if their interest is getting impacted, then they can call for class meeting. ठीक है, so that was all about a shareholder meeting. Then we have got board meeting. Board meetings are supposed to be conducted 4 times in a year. Board meeting means it's a meeting of a board. Board means board of directors. So it is the collectivity of the number of directors. Okay? So they are supposed to they are supposed to conduct a meeting like every quarter. Okay? Every quarter they have to conduct a board meeting. Next is your meetings of board committee. So apart from board, board of members, okay, yes, there are certain board committees also. ठीक है, कोई specific purpose के लिए create होती है, so उनकी भी meeting अलग से होती है. They have got 2 meetings in a year. Then we have got meeting of debenture holders and meeting of creditors. So meeting of debenture holders will only be conducted when their interests are getting impacted. या उनको कुछ discuss करना है, कुछ उनका interest को कुछ alter करना है, या जो भी impact हो रहा है, तो फिर उनका meeting होगा. Next is your meeting of creditors. Meeting of creditors, same the reason. If their interest is getting impacted, okay, they can call for the meeting. Or in the case of winding up, the the creditors can conduct a meeting. Okay, so this is the overall review. Okay, overall review of the company meetings. Okay.
AGM, right? Let's start with the AGM because AGM is quite important. So the first AGM of the company, when the moment the company is been, incorporated, they have to conduct a first AGM, and it shall be held within 9 months from the date of closing of its financial year. जब financial year खत्म होने वाला है उसके 9 months पहले ये लोग first AGM इनको conduct करना जरूरी है. Then we have got subsequent AGM. Subsequent AGM जो आपके normal AGMs पे conduct जो होते हैं, that is one meeting each year. The gap between the two AGMs shall not exceed 15 months. The extension can be for a period not exceeding 3 months. That's it. Then we have got EGM. So as the name suggests, extraordinary general meeting. So, if the shareholders, they have got something urgent business, then they can call for EGM. I hope you can remember Tata Cyrus Mistry case. So Cyrus Mistry, he was removed as a director from the Tata, Tata Sons, from the Tata Empire in the case of AGM, in EGM only. ठीक है, उसको हटाने के लिए EGM बुलाना पड़ा था because that was the urgent task. Here, that is a completely different aspect. So an EGM is convened for transacting some special or urgent business that may arise in between two AGMs. ठीक है, अगर AGM का आप वेट नहीं कर सकते हैं और आपको कुछ स्पेशल या अर्जेंट बिजनेस डिस्कस करना है, you can go for EGM. For instance, change in the objects or shift of registered office or alteration of capital, removal of directors or auditors. ठीक है, यहाँ पे टाटा साइरस मिस्ट्री को भी साइरस मिस्ट्री को भी हटाया गया था EGM में. Next, we have got board meetings. So the first meeting, it shall be conducted within 30 days of the date of its incorporation. The subsequent meeting that should be held, it should be 4 meetings every year. Matlab like in every quarter, a meeting should be conducted, board meeting should be conducted. अगर आप लोग न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो जितने भी कंपनीज होती हैं वो हर क्वार्टर अपने अपने हर क्वार्टर पे सब सारे कंपनीज का एक क्वार्टर नहीं होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट. तो कंपनीज अपने हर क्वार्टर पे रिपोर्ट वगैरह लाती है एंड उन्हीं की वजह से शेयर्स वगैरह काफी घटते बढ़ते रहते हैं. सो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट. तो बोर्ड मीटिंग्स बेसिकली 4 बार every year it is conducted, and there is a gap of 3 months, 3 to 4 months. ठीक है, वो आप पे है. Right. Now the quorum means the strength, the attendance. That should be 1/3 of its total strength. 1/3 of its total strength मतलब कि for example कि if in a board of there is a board of directors, supposedly the number of directors in a board of director is 9. Okay, then 1/3 of its total strength, that will be 1/3 of 9, which is 3. So minimum there has to be 3 directors to conduct a board meeting. अकेले director board meeting conduct नहीं करेगा, ठीक है. Quorum of board meeting, again, section 134, 1/3 of the total strength or 2 directors, whichever is higher. Section 174 is not applicable to OPC, in which there is only 1 director. The logic is also simple because OPC में सिर्फ एक ही बंदा ही रहता है. Then we have got vigil mechanism. It is completely different aspect from the directors. एक vigil mechanism होता है. It is being covered under section 177 clause 9 या whistle blowing भी इसे कहते हैं. They are formed for the directors and employees who may report genuine concern. Whistle blowing. इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो आप क्या कहोगे? सीटी बजाना. सीटी बजा कब आप बजाते हो? जब किसी को अलर्ट करना होता है. तो यही लॉजिक यहाँ पे भी है. विसल ब्लोइंग का यही है कि अगर एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को अगर कुछ कंसर्न लग रहा है, कुछ ट्रिगर हो रहा है, राइट, तो वो चीज अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. एंड इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी है. दैट एलिजिबिलिटी, एवरी लिस्टेड कंपनी दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कंपनी, borrowings from banks and PFIs more than 50 crore. So ऐसे कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म फॉलो करना जरूरी है, इनको ऐसा कंडक्ट करना जरूरी है, ठीक है. Then we have got class meeting. Like I've said, class meetings are the meetings of the shareholders holding a particular class of share which is held
to pass resolution which will bind only the members of the class concerned. So if I talk about that the preference shareholders have got some concern and they can call for the class meeting. Then only members of the class concerned may attend and vote at the meeting. तो preference shareholders जो होंगे वही लोग आएंगे, ठीक है. अब देखो preference shareholders भी 4-5 टाइप्स के होते हैं. उसमें अगर मान लो क्यूमुलेटिव है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव वालों को कुछ मान लो प्रॉब्लम हो रही है तो देन क्यूमुलेटिव वाले ही आएंगे, ठीक है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही फिर अटेंड करेंगे क्लास मीटिंग को. Under Section 48 of Companies Act, variation of shareholders' right, class meeting of the holders of different classes of shares shall be held if the rights attaching to these shares are to be valid. ठीक है. Okay, अगर मान लो कि there is a variation of shareholders' right, then in that case जो class meeting होगी वहां पे different classes of shareholders आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनका अगर उनकी rights variate हो रहे हैं तो that's it. Similarly, under Section 232 M&A, where the scheme of arrangement is proposed, meeting of several classes of shareholders and creditors are required to be held. So, in case of merger and amalgamation also, so when merger and amalgamation means when two companies are coming together or one company is acquiring the other company. So, in that case, there is the variation of the rights of the shareholders, right? Who are working, who are in these two companies. So, in that case, yes, they can also conduct a class meeting in case of merger amalgamation. So that was all about the meetings. Now let's talk about the directors. Okay. Who are the directors? Yes. How can you define directors, or what is the importance of directors in a company? Yes. Who is director? Who is director? Yes. Yep. So see, director, the term director, they are very important for a company. They are given under Section 234. The definition for director has been given under Section 234. And it prescribes that director means a director appointed to the board of a company, and there is no exhaustive definition given for director. They are appointed to perform the duties and function of the director of a company. Section 2, Clause 10 defines board of directors in relation to the company means a collective board of the directors of the company, and they are the brain of company. क्या समझ में आ रहा है? See, we all are aware that company is an artificial person. Company doesn't have its own mind or limb कि वो decision ले सके. Then who is going to run that company? ठीक है, shareholders हैं, the shareholders, they are important, okay. They have invested their huge amount of money. But shareholders company के लिए काम नहीं करते हैं. कंपनी का काम कौन करेगा? Directors करते हैं. कौन करता है? Directors करता है. They are going to perform the duties and functions. शेयर होल्डर्स नहीं करेंगे. शेयर होल्डर सब डिसीजन लेते हैं, ठीक है. डिसीजन लेंगे, अच्छा हाँ हमको ये चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसे चाहिए. दे आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शंस विद इन अ कंपनी. हु आर दे? हु इज गोइंग टू डू दैट? इट्स द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स, यू कैन से दैट दे आर द पॉलिसी मेकर्स. वो पॉलिसी बनाएंगे, सारा विजन वो लोग क्रिएट करेंगे, सब चीज करेंगे. फिर उसके बाद अपने मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसको वो बताएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे काम होना है. फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, फिर वो लोग काम करते हैं, ठीक है. शेयर होल्डर्स दे जस्ट शो द इंटेंशन कि हाँ उनका विजन क्या है, बट जो एग्जीक्यूशन है दैट इज बीन डन बाय द डायरेक्टर.
तो डायरेक्टर का कोई ऐसा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दिया है अंडर कंपनीज एक्ट में। तो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर का देखो कहीं कोई डेफिनेशन दिया नहीं। देखो डायरेक्टर का आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्यूज मी, यस, सो जो डायरेक्टर है दे आर ब्रेन ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड they conduct the company affairs, or they act on behalf of the company. They can act as an agent of the company as well. They can act as a trustee of the company also. And they got the fiduciary relationship with the company. जहां पे टर्म fiduciary आ जाता है वहां पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है। तो डायरेक्टर यही पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। अब देखो अंडर कंपनीज एक्ट वी हैव गॉट सेक्शन 149 which talks about the number of directors also and the types of directors also. So if it is a public company, minimum there has to be 3 directors. If it's a private company, there has to be 2 director. In case of OPC, एक होता है director, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टर इट कुड बी 15, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इट कुड बी 15 इन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर से आप ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हो आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देयर इज नो अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज आर द मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम इज 15। 15 से ज्यादा आपको एक अपॉइंट करना है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? यस, यस, व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? यस, सो सी देयर आर सर्टेन बिजनेसेस, ठीक है, विद इन अ कंपनी that requires passing of special resolution. Special resolution matlab, yes, two-third. Are you sure two-third or three-fourth? I can remember 75% to 75 to three-fourth ही होता है। Yeah. So see, special resolution, yeah, there has to be three-fourth, ठीक है, three-fourth होता है majority, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है, लाइक 50-50 वाला रहेगा आपका, 51%, ठीक है। 51% आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज इन द केस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बिजनेस होते हैं वो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके लिए आपको मैक्सिमम मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम मेजोरिटी चाहिए। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी अगर 51% भी मिल गया है तो हो गया है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन, so resolution they are divided into two types, special and ordinary. Special में आपको 3/4 चाहिए, ordinary में आपको more than 50%, ठीक है। 51 भी मिल जाएगा तो obviously हो जाएगा, ठीक है। Half. Now what is there? So these were the minimum and maximum number of directors. Now the resident director has been given under section 149 clause 3। अभी बात करते हैं types of directors के भी बारे में। Apart from that, disqualification of directors is given under section 164. Now, 165 does talks about the number of directorship. Maximum number of directorship, including any alternate directorship, a person can hold is 20. मतलब एक बंदा, एक person, maximum 20 कंपनी का वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। डायरेक्टरशिप वो होल्ड कर सकता है। वन पर्सन कैन होल्ड मैक्सिमम 20, लाइक 20 नंबर ऑफ कंपनीज का वो डायरेक्टर बन सकता है। प्रोवाइडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी मस्ट नॉट एक्सीड 10, जिसमें कि आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 से ज्यादा वो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। बाकी पब्लिक प्राइवेट कंपनी का बन जाए, ओपीसी का बन जाए, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी का अगर है वो तो मैक्सिमम 10 से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता।
एंड द नंबर्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन से आप चेंज भी कर सकते हैं। नाउ the types of directors, they are given majorly they are given under section 149. तो types of directors, residential director होता है section 149 clause 3 में दिया है। रेसिडेंशियल जहां आ जाएगा मतलब जो कि रेसिडेंट है, ठीक है, एटलीस्ट 180 डेज तक वो इंडिया में स्टे करे, ठीक है, उसको आप रेसिडेंशियल डायरेक्टर बोलोगे। नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि सेक्शन 149 क्लॉज 5 और 149 क्लॉज 6 में उसका टाइप वो दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि दे आर नॉट दी होल टाइम डायरेक्टर, दे आर नॉट, अच्छा देखो, one thing I should discuss with you before going through this. एक अगर आप जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे फॉर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव, आई होप यू कैन सी इट, एग्जीक्यूटिव लिखा है मैंने यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट अंडर कंपनीज एक्ट, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज, ये मैं बता रही हूँ आपको। Executive directors, you can say that executive directors, they are quite active directors, active in the sense कि काफी ये लोग क्या कहते हैं, ये पार्ट होते हैं कंपनी का। बाकी लोग भी हैं, लेकिन वो जो डेली अफेयर्स होता है ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी और द रेगुलर अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं, यू कॉल देम एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। So far we have covered residential director. So residential director is a executive director. अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का खाली यही काम होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं, राइट, वट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे शुडंट बी बायस्ड। whatever decisions are taken by the board of directors, वो अनबायस्ड होने चाहिए, वो किसी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करने चाहिए। ऐसे आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम होता है। और ये लोग जो डेली अफेयर्स विद इन अ कंपनी है, ठीक है, उस पे उनका उतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप का है डायरेक्टर, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव टाइप का डायरेक्टर होता है। एंड इसका अप्रोच यही है कि वो बायस्ड बिल्कुल नहीं रहता, जो भी वो ऊपर ऊपर से देखता है कि हाँ, कंपनी के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कहीं वो बायस तो नहीं, कहीं वो किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, वो कंपनी के एक्टिव डायरेक्टर का पार्ट वो होगा ही नहीं, ना वो होल टाइम डायरेक्टर होगा, ना वो रेसिडेंशियल डायरेक्टर होगा, ठीक है, राइट। सो ये ऐसे नहीं होगा, ऑल राइट, राइट। एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और ये भी ऐसे चेक किया जाता है, इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू क्लॉज 6, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो कोई ना कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता है कंपनी के साथ, ना ही इसके किसी रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशनशिप होना चाहिए, इस टाइप का वो वहां पे पूरा दिया गया है। बट उतना मैं पढ़ने के लिए बोलूंगी नहीं, आप बस नाम जाने रहिए। यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज। Next director is a woman director, and it is covered under section 149 clause 1, जहां पे आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, उसी के सेकंड प्रोवाइजो में दिया गया है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन डायरेक्टर आया, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर सारे कंपनीज को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, जो लिस्टेड कंपनीज है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उन्हें वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी। देन आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अगर मान लो कि डायरेक्टर 3 महीने तक एब्सेंट है, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर आप ला सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, काम बहुत बढ़ गया है तो आप एडिशनल डायरेक्टर ले आओ, वो काम कर देगा। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर, दे आर बेसिकली अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर, यू कैन कैटेगराइज देम अंडर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, दे आर नॉट द एक्टिव डायरेक्टर्स।
Last is the small shareholders director. So these kind of directors basically represent the interest of the small shareholders. Okay. So these were the types of directors. Okay. Okay. Residential director, as we have already discussed, the minimum 182 days तक उसको रहना चाहिए. Women director, every listed company or any other public company having 100 crore paid of share capital or turnover of 300 crore. That's it. Independent director, every listed public company at least 1/3 of the total number of directors. So अगर मान लो कि board of director, देखो collectivity of directors is known as board of directors. ठीक है. So if the board of directors of a company has got 9 directors, so 1/3 of उनका 1/3 मतलब एटलीस्ट 9 डायरेक्टर्स के साथ 3 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. तो 9 + 3 टोटल 12 डायरेक्टर्स उस कंपनी में होने चाहिए और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स. ठीक है. पेड अप. तो these are the eligible companies that should appoint independent director. Definition is given under section 149 clause 6 और टर्म इनका होता है 5 years और हर 3 साल पे ये रीअपॉइंट हो सकता है. ठीक है. अब आप लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतने नंबर्स याद रखना जरूरी है. नहीं, नंबर्स इतना याद रखना जरूरी नहीं है. बस एक आप बेसिक सी आइडिया लेके रखे रहो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, रेसिडेंशियल डायरेक्टर क्या होता है. नंबर्स यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं. Now, director selected by the small shareholders. Small shareholders means these shareholders holding the value of shares amounting to ₹20,000. ठीक है. तो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एडिशनल डायरेक्टर. ठीक है. द पावर ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर इज कन्फर्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जो 3 महीने तक एब्सेंट है उसकी जगह आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर ला सकते हो. ठीक है. Then a nominee director, they basically a board may appoint any person as a director nominated by any institution pursuant to the provision of any law for the time being in force or of any agreement or by the central government or the state government. ठीक है. तो ऐसे डायरेक्टर्स को आप नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं. 161 क्लॉज 3 में है. So that was the concept of director. इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आइए जल्दी डिस्कस कर लें. ये भी कभी पूछा नहीं गया है क्लैट पीजी में. सो देयर इज दिस रूल ऑफ मेजोरिटी. ठीक है. रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि वॉट एवर द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आर टेकिंग डिसीजन दैट विल बी बाइंडिंग ऑन एवरीवन. But what if the decisions taken by the majority shareholders are unfair to the minority shareholders? That then what going to happen? ठीक है. Whether that minority shareholders are going to bring case against the majority shareholders or the company should bring the case against the faulters. ठीक है. जो भी culprit हैं, जो भी fault किए हैं. So this is what is known as rule of majority. ठीक है. So see, if ये second point देखिए, that if the wrong is done to the company, then the only company can institute a suit against a wrongdoer and the shareholders individually do not have the right to do so. अगर मान लो कि within a company there are 10 people, ठीक है, मतलब as an example I am telling you, and out of 10 of them, what 8 is deciding that is completely against the remaining 2 people. तो क्या वो जो remaining 2 people हैं, क्या वो लोग जाके केस कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट या उन मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट? नो. Rule of majority says that whatever has been decision taken by the majority shareholders, that will be binding on all the members of the company, that will be binding on the company. तो कंपनी यहाँ पे सफर कर रही है. So company is suffering over here. So company should bring an action against the wrongdoers. ठीक है. पूरे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स पे वो नहीं करेगी, लेकिन जिसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है उसके अगेंस्ट कंपनी इज गोइंग टू ब्रिंग एन एक्शन. इसका एक लीडिंग केस लॉ था फॉस वर्सेस हार्बोटल. बस आप इतना जाने रहिए, ये आएगा नहीं वैसे. ठीक है. ये इग्नोर ही करना आप. नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ये सेक्शन 241 से 246 तक दिया गया है चैप्टर 16 में.
What is the purpose of prevention of operation mismanagement? It is to safeguard the interest of investors, including minority shareholders in companies, and also to protect the public interest. So whatever decisions are taken by the majority shareholders, they might not be useful. They might be, compromising the interest of the minority shareholders. And what are the remedies available to the minority shareholders is being covered under prevention of operation mismanagement. So the terms operation and mismanagement, they are not defined under the act. Now, see, so if there is operation and mismanagement, how you are going to prove? First of all, ठीक है, so ये तो एलिजिबिलिटी दी गई है, okay. This is section 245. Okay. Just a minute. So once if you are going to refer Bear Act, okay, Bear Act में if you are going to refer section 241, there are 2-3 points given over there. Ki if the decisions taken by the company or if the affairs of the company are undertaken in such a way that it is, they are prejudiced to the company's interest, they are prejudiced to certain number of people, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, राइट, 2-3 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं. सो those situations create the situation, or those situations can lead to the operation and mismanagement. So wherever there is, lack of representation of interest of the shareholders, or wherever there, minority shareholders' rights are getting disturbed or oppressed, okay, then you can bring an application to the tribunal. Here you have to note that in case of operation mismanagement, an application can be written to the tribunal. And who can write application to the tribunal? It can be the member of a company under section 244, or it could by the CG. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिख सकता है एंड मेंबर भी लिख सकता है कंपनी का. ठीक है, so if you want to apply as a member of a company, ठीक है, if you are writing an application to the tribunal for the operation and mismanagement, it is covered under section 244. ठीक है, so if you are a minority shareholder, you should you should prove that. अच्छा ठीक है, so if in case of a company having share capital, types of companies, further classification we have also done that a public company can also be that a public company, it can be also a type of public company limited by shares, limited by guarantee, or having unlimited liability. Same as with the private company or the OPC. So देखो, if the company, if it is a company, if it is having a share capital, then in that case, the application, it should be signed by at least 100 members, or whether by at least 1/10 of the total number of its members, whichever is less. 1/10 or 100 members, ये number होना चाहिए. ठीक है? In the alternative, a valid application may be made by any members holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company. या इतने number and या single member या a couple of member not holding less than 1/10 of the issued share capital of the company, मतलब जिसके पास 10% है कंपनी का. ठीक है, राइट, या तो 100 लोग हो, या तो अगर मान लो कंपनी में 1000 मेंबर हैं तो 1/10 ऑफ 1000 कितना होगा, 100 लोग होंगे, या 2000 लोग हैं तो 200 होंगे. ठीक है, या जिनके पास 10% है शेयर कैपिटल कंपनी का. ठीक है, तो ऐसे लोग ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका सेक्शन 244 कहता है. बाकी कंपनी की भी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में 1/5 आपका आ जाता है. ठीक है, शेयर कैपिटल में 1/10 है, 100 है. ठीक है, ये सब फिगर्स है यहाँ पे. 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अब एप्लीकेशन लिखने के बाद सीजी सेक्शन 241 में लिखेगा. ठीक है, अब रिलीफ क्या देता है एनसीएलटी, दैट रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, द परचेज. कई रिलीफ्स हैं. ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रिलीफ्स गिवन अंडर सेक्शन 242. तो ट्रिब्यूनल को समझ में आएगा तो वो अकॉर्डिंगली जस्ट एंड कॉज ऐसे करके था. तो
ठीक है। सो उसके हिसाब से वो रेमेडी दे देगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेक्शन 242 याद रखना है, वो भी बहुत ही कम चांसेस है कि ये आए। ठीक है, एक बार पढ़ सकते हो जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका आता है क्लास एक्शन suit which is given under section 245. So whatever suit we have been discussing that was related to the operation and mismanagement, then in that case the minority shareholders will come forward, they will write an application to the tribunal. But if I talk about the class action suit, then see the particular class of members, ठीक है, particular class of members who are present within a company, like members are there, depositors are there. So if their interests are getting compromised, then they can approach to the tribunal. जैसे आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, वैसे ही आपका क्लास एक्शन सूट भी होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ number of interest is represented by small number of people or a couple number of people. ये आपका क्लास एक्शन सूट है अंडर सेक्शन 245. That's it. What does company law provision states for the minority shareholders protection? A shareholder to get relief must establish that the operation prejudice is so grave that it is just and equitable to wind up the company. They must prove operation mismanagement of the company. If NCLT is satisfied, may order for wind up. ठीक है, तो ये छोटा सा है। ठीक है, सो सिर्फ बाइंडिंग अप ही रेमेडी नहीं प्रोवाइड करता है एनसीएलटी। इफ देयर इज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, और भी कई तरीके के रेमेडीज वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 242 में दिया है। सीएसआर वाज ऑलरेडी डन। सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 135, एवरी क्लॉज इज इंपॉर्टेंट, प्लीज देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा ही प्रिपेयर करना है आपको। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन क्या होता है, बस आप देख लो। तो देखो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, एंड इट कुड बी इंटरनल ऑल्सो, इट कुड बी एक्सटर्नल ऑल्सो। एक्सटर्नल अरेंजमेंट का मतलब यू आर कोलैबोरेटिंग विद द आउटसाइड बिजनेस। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ आप कोलैब कर रहे हो। इंटरनल में अपने ही कंपनी के विद इन आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी मैनेजरियल, इट कुड बी ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और क्या था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है दैट इज बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर, और डिस्प्यूट एलिमेंट होता है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज में। अरेंजमेंट में कंपनी और मेंबर्स होते हैं, देयर इज नो डिस्प्यूट एलिमेंट। अमेलगमेशन जैसा मैंने आपको बताया, मर्जर अमेलगमेशन ऑलमोस्ट एक ही टाइप का कंसेप्ट होता है। इसका भी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है, टैक्स एक्ट में आपको दिखेगा, इनकम टैक्स एक्ट में वो भी अमेलगमेशन का दिखेगा शायद। ठीक है, तो वहां पे अमेलगमेशन मर्जर का मतलब क्या होता है कि दो कंपनी साथ में आ रही है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कहते हैं, मर्ज कर रही है, या वैसे एक्वायर कर रही है, तो उसको आप अमेलगमेशन कहते हैं। M&A के जो सेक्शन है दे आर बीइंग कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 230 टू 240। ठीक है, और एनसीएलटी ही देखो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है। एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हायरार्की बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी है, फिर उसके बाद एनसीएलएटी आता है, देन सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, नाउ मोड्स ऑफ क्लोजर ऑफ कंपनी, तीन तरीके होते हैं लाइक थ्रू विच द कंपनी कैन बी क्लोज। वन इज द रिमूवल और स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज अ वाइंडिंग अप, लास्ट इज अ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। रिमूवल जो है आपका सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है। रिमूव कौन करेगा, आरओसी करेगा। ठीक है, अगर कंपनी एक साल तक कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, मुझे ध्यान है कि अभी 2-4 महीने पहले आई गेस, ठीक है, फाइन। If the company has failed to commence its business within 1 year of its incorporation, company is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial year. The company is not carrying on any business operation revealed by the registered office of the company. तो ऐसे केस में आपका जो आरओसी है वो नाम हटा देगा कंपनी का फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट। पहले आपका वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी वाइंडिंग अप पहले प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज लेक डाउन द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कंपनी कैन बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कंपल्सरी रहा, वॉलेंट्री चला गया वहां पे आईबीसी में।
Section 272 clarifies about the list of person who shall be entitled to file the and petition for the winding up of the company. That's it. लास्ट आता है आपका लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एज पर आईबीसी सेक्शन 59 में आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है, जो कि पहले कंपनीज एक्ट का पार्ट था, लेकिन 2016 से आपका यहाँ पे चला गया। और देखो, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है आज, तो एक्स्ट्रा ही था। जो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जो कि 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं, ठीक है। इफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क, you may ask. If you have any doubt with respect to anything, you may continue. You may ask. Yes. Anything, if you want to ask, you may ask.